that as a young student, I had the opportunity to go through this same experience and get to spend time and at the feet of great gurus like our convention happening this year. So the objective of SPIC MACAY or our arts, it is to give you an opportunity to look within and connect with yourself. And by that, with my limited understanding, it is a very, very abstract concept. So great masters spend their entire lifetime, trying to perfect that one single note and, you know, trying to perfect that one shadaj or that one pancham, which can produce such a strong effect that it can bring you to the alpha zone. And what we have learned is that most of the matter or the tangible domain is just very limited, or say 5% of the total matter in the universe, but the intangible or the experiential domain is much, much larger and much, much vast. So in these 5 days, you will get the opportunity to dive a little bit into that ocean. We say that the great masters have said कि इतना बड़ा समंदर है, जब तक गोता नहीं लगाएंगे तो उसकी गहराई पता नहीं चलती है. तो इस वक्त आपको गोता लगाना है और थोड़ा थोड़ा उसकी गहराई तक पहुंचने की कोशिश करनी है. तो और उसको उसके एहसास को महसूस करना, वो फीलिंग, वो the abstractness, to get to that mystical and abstract experience, we all have to follow few of the guidelines while we are attending and learning. So as we say that, God lies in small details. So during this convention, every single minute that you spend, we should all try to give ourselves that platform to be able to delve within or dive into the inner ocean. And for that, you need absolute peace. You need absolute sanctity and a sacred environment. And to maintain that, we are having holistic food. We are having yoga from morning 4 a.m. because the day starts with Brahma Muhurat, and then the afternoon concerts and the evening concerts. So the attempt is to give you a focused platform, an opportunity to delve within yourself and get that tending delta to zero, an experience of the abstract. तो आपने अगर बहुत कोशिश की तो I'll quote Dr. Said that you will try to reach the base 3 of Mount Everest, and some of you will reach the second base, and a few will actually touch the tip or climb to the tip of the Mount Everest. So that should be our attempt. And yes, so that should be our attempt during these 7 days, which is why we have requested you to abstain from mobile phones, to abstain from during concerts or during the workshops, we will try to speak less, because Dr. Said says that a nectar, our mind is like a small pitcher, and over this course of this experience, it is filled with nectar. It is filled with a divine experience of bliss, and that pitcher full of nectar, it immediately
loosens or loses all the nectar once you start speaking. And to get an opportunity to dive deep within, to go deep within, we need that peace, we need that calm, and you need that effort from all of you, that constant effort, that struggle. It will be very tough. The morning yoga, the 9 to 12, it will be very strenuous and very stressful. And but I'm sure many of you will take back home memories of a lifetime. So with that, I'll request ma'am to take it forward. Thank you. Thank you, Sabya. So you ever had an experience where you looked at something and said, wow, oh, that was so nice. You ever had an experience like that? Oh, I'm getting goosebumps. Have you ever got goosebumps? You see someone perform or something and had an experience? You remember it? You want to have more like that? This is the place to be. So, I'm going to call Suman Dunga, who lives in Delhi. She is a very, very dynamic lady. मतलब ऐसे ऐसे काम करा देती है वो सारा ना. So she is the national vice chairperson of SPIC MACAY. She is the mother of 2 grown-up girls, and I want to invite her to talk to you and tell you about her experience, what she likes about being here in SPIC MACAY. Okay. नमस्ते. नमस्ते का जवाब दीजिए. कैसा लग रहा है? मैं स्पिक मैके में 2001 से जुड़ी थी, आप लोगों की तरह ही. मैं एक विद्यालय में वाइस प्रिंसिपल थी बनारस में, और हमारे विद्यालय में मेरी प्रिंसिपल ने बोला कि आप कल विश्वमोहन भट्ट जी का प्रोग्राम है और आपको ऑर्गेनाइज करना है. मुझे स्पिक मैके का कुछ भी नहीं परिचय था. वहाँ जब मैंने एक्सपीरियंस किया, अरेंजमेंट किए गए, गद्दे बिछाए गए, बच्चों को नीचे बिठाया गया, चप्पलों को लाइन से लगाया गया और कार्यक्रम किया गया. उसके बाद ऐसा मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि पद्म विभूषण हैं आर्टिस्ट हमारे, पद्मश्री हैं, और विश्वमोहन भट्ट जी तो ग्रैमी अवार्ड विनर भी थे. कभी पॉसिबल है कि इतने बड़े कलाकार आपके विद्यालय में आएंगे और परफॉर्म करेंगे? तो मुझे इस बात ने बहुत इंस्पायर किया कि कोई ऐसी संस्था है जो हमारी संस्कृति को बचाने में, बच्चों को बचाने में काम कर रही है. तो मुझे उससे इतना जुड़ाव हो गया कि मैं उससे आज तक जुड़ी रही. बच्चों, ये स्पिक मैके एक ऐसी चीज़ है जो आपको एक अच्छा इंसान बनाने में मदद करती है. अच्छा डॉक्टर तो आप एकेडमिकली बन जाएंगे, अच्छा इंजीनियर भी बन जाएंगे, लेकिन जो एक अच्छा इंसान है, जो आपको अंदर में एक अंतरात्मा की आवाज़ है कि आप एक ह्यूमन बीइंग है अलग, जो आपकी आइडेंटिटी है, जो आपको किसी को नहीं दिखानी है, वो आपके साथ रहेगी, वो आपकी बलशाली, वो बल आपके पास रहेगा. तो जिसके भी अंदर है वो यहाँ रहने से सक्रिय होगा. जब आप आज तो पॉसिबल है ही नहीं कि फ़ोन से कोई अलग हो, और यहाँ पे देखिए फ़ोन से अलग होने के बाद आप लोग एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं, जुड़ रहे हैं. तो ऐसे ही मैं भी जुड़ी और मेरी यात्रा बहुत अच्छी रही. और मैंने एक बारी, जब दिल्ली में मैं रहती हूँ, हमारी एडवाइजरी बोर्ड की मीटिंग हुई, तो मैं जॉब करती थी कहीं. सैटरडे को मैंने ऐड देखा पेपर में और मैं फिर दोबारा चली गई. वहाँ जाकर मैंने देखा कि किरण जी मीटिंग ले रहे थे, बड़े बड़े लोग थे, और मैंने किरण जी को याद कराया कि मैं बनारस में मैं आपसे मिली थी. तो उन्होंने कहा आइए बैठिए. तो मैंने बोला मुझे भी काम करना है. तो उन्होंने मुझे IIT दिल्ली का एड्रेस दिया और मैं गई.
और आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं सोच रही थी कि मैं सीखूंगी काम कैसे करते हैं, और अगले दिन किरण जी ने की ऑफिस में वेडनेसडे की मीटिंग होती थी और वहाँ काम दे दिया गया कि आपको ये मोदी जी की स्पीच को ट्रांसलेट करना है और आपको नॉर्थ इंडिया में प्रोग्राम कोऑर्डिनेट करना है। और समझ में ही नहीं आया कि हम कैसे समुद्र में गोता लगाते लगाते काम करना सीख गए, और 2011 से मैंने मीडिया के डोमेन को संभाला। मेरा बैकग्राउंड मीडिया का बिल्कुल नहीं था, लेकिन इस संस्था के पूरे सहयोग और सपोर्ट के साथ मैंने काम सीखा। और हम कहते हैं ना कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, वैसे ही है कि अगर मीडिया हो तो हमारी जो संस्कृति है जिसको हम आगे बढ़ाने का प्रचार प्रसार कर रहे हैं हमारे महान कलाकारों के द्वारा, वो आगे बढ़ाने में पूरा सहयोग मीडिया के द्वारा पॉसिबल है। क्योंकि आउटरीच कहाँ है, गाँवों में, दूर दराज शहरों में, सब जगह तक, हर बच्चे तक पहुँचने के लिए मीडिया बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आज यहाँ हमारे साथ दूरदर्शन भी है, हम उनका धन्यवाद कर रहे हैं। और ये यात्रा ऐसे ही चलती रही और बस जुड़ता गया, कारवां बनता गया। और आप बच्चों को देखकर मुझे बहुत जोश आता है और मैं इसी तरह से काम करना चाहती हूँ अपनी लाइफ में। और देखिए सुप्रीति हैं, कितनी स्ट्रांग हैं, जो इतना एफिशिएंटली काम करती हैं। हमारी सारी टीम के जो तिवारी सर हैं उनसे हमने काफ़ी सीखा। सब्यसाची ने मेरे कितने हमारे प्रोजेक्ट में मेरे को बहुत साथ दिया। एक सपोर्ट द आर्टिस्ट हमने कोरोना में काम किया था, बिल्कुल सब्यसाची ने कंधे से कंधा जोड़कर मेरा बहुत साथ दिया, जिसमें हमने 570 कलाकारों को स्पिक मैके की तरफ से 5-5 हज़ार रुपया प्रदान किया गया, कि जो बहुत ही ज़रूरी था उस टाइम। तो मैं किरण सर का, स्पिक मैके का, आप बच्चों का, सबका धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने एक्सेप्ट किया मुझे। थैंक यू। थैंक यू सुमन, थैंक यू। So how can you make this experience the best for you so that you get? So हमारे एक और वाइस चेयरमैन हैं पंकज अग्रवाल जी। पंकज जी आप कहाँ हो, आ जाओ, है ना। सो पंकज जी आ रहे हैं। He is from Ujjain and he has been volunteering with the movement for many years. सो आप अटेंड करने आए हो और हम वॉलंटियर करने आए हैं। सो जब हम वॉलंटियर करते हैं तो हम क्या करते हैं, सेवा करते हैं, मैनेज करते हैं, और क्या करते हैं, गाइड करते हैं, और क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। सो उस हिसाब से हम एक दूसरे के साथ होते हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं। सो मैं अभी पंकज अग्रवाल जी जो हैं, जो उज्जैन से आए हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगी कि ही शुड शेयर हिज एक्सपीरियंस विद यू। गुड आफ्टरनून बच्चों, हाउ इज़ द जोश? हाँ, अच्छा लग रहा है आपको? पक्का? ठीक है। तो मैंने स्पीक मैकी की अपनी जर्नी 30 वर्ष पूर्व चालू की थी, जब मैं इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया था मैंने गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज उज्जैन में। तो हमारे सीनियर्स ने बोल दिया कि चलिए दरी बिछाइए, उसके ऊपर गद्दा बिछाइए, चादर बिछाइए। फिर हमको हार लेके खड़ा कर दिया साइड में कि आप हार पकड़िए, जब आर्टिस्ट आएंगे तो आपको सिर्फ देना है हमें। ऐसे मेरी जर्नी चालू हुई। धीरे धीरे चैप्टर कोऑर्डिनेटर बढ़े हम, स्टेट कोऑर्डिनेटर, अब नेशनल एग्जीक्यूटिव में वाइस चेयरपर्सन हूँ मैं। तो आप लोग आए हैं यहाँ पे, तो क्या एम है आपका स्पीक मैके के लिए? कन्वेंशन ज्वाइन करने आए तो क्या आपने सोचा है, काय के लिए आए हैं यहाँ पे? क्या मिलेगा आपको, बताएं। एक्सपीरियंस तो मिलेगा, और नॉलेज, और डिसिप्लिन, और स्किल्स, ये सब हो चुका है। और
न्यू पर्सपेक्टिव, वेरी गुड. और कॉन्फिडेंस, नॉलेज हो गया है. या यू ऑल बिलीव इन गॉड. यस. तो आपको लगता है म्यूजिक से रिकॉर्ड मिल सकते हैं? पक्का? या आई एक्सपीरियंस सच थिंग्स कि आप म्यूजिक अगर करते हैं या सीखते हैं या देखते हैं तो आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं. थैंक यू. Thank you, Pankaj. Thank you very much. So if we want to get the best experience, then we have to eat the right food. That's why we are making sure you get holistic food, which you must eat at the right time. So, have you ever eaten dinner at 5 p.m.? But now you're going to do that. You know why? If you eat before the sun sets, if you eat before 6 o'clock, then it takes 3 to 4 hours for the food to digest. And when the stomach has digested the food, when it's resting, you can also rest well. So when you rest well, you can wake up early. So if you eat before 6 and your food is digested, when you finish the concert at 9, 9:30, you go to bed, you can wake up at 3:30 because your stomach is not heavy, your system is not heavy. But if you go back and you eat at 9:30, then 3 hours after that, 12:30, then you may get some sleep. Will you wake up at 3:30? No. Then at 6:30 also you will be saying, half an hour, let me sleep more. So there is a reason for why the program is designed like this. There's like 3 hours of focused concentration. From 4 to 7, from 9 to 12, from 2 to 5, from 6 to 9. So in the morning, when you wake up and you do yoga, you are preparing your body and mind to open up and to receive new knowledge, new experiences, to be open. That's what yoga does, no? It helps us to open our blocked energies. To do yoga, we can do yoga through different routes. Hatha yoga. We can do concentrated practice through music. Nada yoga, Dhrupad, Hindustani music. We can do that through dance, through classical dance, like Kudiyattam, or theatre like Kudiyattam or Mohiniyattam. We can do that by singing praise of the Lord, like we do in Gurbani. So there are different routes, and we have brought all of those, including one which is meditation taught by the Brahma Kumaris. Okay? So we have that in the morning from 4 to 7 to help us to be more open. And then 9 to 12, you are in 24 different intensives or workshops with the greatest gurus of the country. Have you ever learned science? Do you know who Einstein is? If Einstein came to teach you science, how will it be? Mathematics? Okay. If Premchand or Shakespeare came to teach you literature, how will it be? समझ में आएगा? शायद. कभी-कभी it may go from. We are bringing you the Einsteins and the Shakespeares and the best of Mohiniyattam, Kathak, Bharatanatyam, Kuchipudi, Hindustani music, Carnatic music, Dhrupad, all the different arts and crafts of the country, folk forms like Pungcholam or puppetry, all of those. The best.
when you have that opportunity, which all those other students in your class and school don't, then you should make the most of it, right? So to make the most of it, make sure that before you enter your class at 8:55 a.m., make sure that you have finished with filling up your water bottle, going to the washroom, washing your face, eating your breakfast, or anything else that you want to do. So that 9 to 12, when you are with your guru, which is a rare opportunity, you can grab as much as you can. There will be no breaks between 9 to 12 because we are doing 3 hours of concentrated work. Then you come out for lunch and 1 o'clock, 1:15, you come to the hall. And in the hall, you are doing yoga nidra for 45 minutes only. But if you do it properly, it feels like you slept for 4 hours. Who is going to make you do that yoga nidra? Who is going to guide you through it? Is Swami Tyagaraj, who is from the Bihar School of Yoga. Swami Tyagaraj has been associated with SPIC MACAY for many years. He's a very, very refined person, very great person. And the way he teaches us and the way he guides us is beautiful. So make the most of it. Make sure you are in the hall before 1:10 and you find space to lie down, because Yoga Nidra should be done like that. Okay? So that you can be here, because 1:15 we will lock all the doors. Nobody can come in and go out. No one should disturb the other person, right? So make sure you come in and you're here for Yoga Nidra. Then 2 to 5, 5:30, we are doing the folk performances from different parts of the country. So we have Gombe Atta. You know where it is from? Which state? Karnataka. Then we have Pungcholam. Where is it from? Pungcholam. You know what Pung means? From Manipur. Pung means it's a drum that they play in Manipur, and that's the dance form around that. Right? So we have many others. We have Kavvali, we have Gurbani, we have Pandavani, we have a music and prayer session, we have Maharashtrian folk, beautiful folk from all over the country. After you have watched all that, and you also get to watch one beautiful film called Images, which is made by Girish Kasarwalli sir on Adur Gopalakrishnan sir. Do you know who these two are? You know who Girish Kasarwalli sir is? He is a director of films. He has got the National Award for Best Director 14 times, which must be a record, I think. And Adur Gopalakrishnan sir is his guru. He is a Padma Vibhushan artist from Kerala who has made very deep thinking films. He's a great thinking cinematic director. So after you see the film that Girish sir made on Adur sir, then both of them will be sitting here on stage to answer your questions. Isn't that a great opportunity? Do you get to watch a film and then talk to Shah Rukh Khan about his experience? Do you get to watch a film and ask Kareena Kapoor about her experience? But you're going to watch a film and ask Girish sir and Adur sir about their experience. Isn't that great? Like today, you saw Rajit Kapoor sir? So after all that, then again you go for dinner and you come back. And in the evening, 6 to 9 is where you uplift yourself with the most sensitive art forms of music and classical dance, which have survived the test of time. Only in our country, we can say that for 20 generations, people have been learning this art form. Can Michael Jackson say that? That his father, his grandfather, they were all rock stars?
Can Justin Bieber say that? Can One Direction say that? But we can say that. You have Vasifuddin Dagarji, who is the 20th generation in his family lineage. They have all been singing. Isn't that unique to our country? Do you think it is unique? So we need to celebrate our uniqueness. That's the beauty. So you're going to watch beautiful dances, Odissi dance, which I love so much. You have the best performing vocalists. You have Prabhat Tretai, you have Dr. N. Rajam, who's a violinist. You know, Dr. N. Rajam comes from a family of violinists. Her brother used to be a great Carnatic violinist. Her daughter is a violinist. Her granddaughter is a violinist. Her niece is a violinist. Her uncles are violinists. Everybody in that family is full of violinists. Imagine you wake up in the morning and everybody is playing the violin. Nice to grow up in that environment, no? So we are introducing everybody to very unique and different, beautiful experiences. And then when you go to sleep, you want to go to sleep at the end of the day or not? When you go to sleep, just before you go to sleep, we'll give you a little bit of some milk or milkshake or something just to cheat the stomach that I'm giving you something, but it's not food. Just so that, and then you go to sleep. And then in the morning, will you wake up on your own? How will you wake up? You don't have your alarms, no? Who will come to wake you up? Knock, 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 come the volunteers. Knock, 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 wake up. Okay? And then you have to wake up and come for your yoga. This is the way your day clock runs. Yeah? Night nutrition. Yes, you'll get night nutrition. So now, after having given you this download on what you're going to do, I want to invite our chairperson. Where is he? Tiwari ji, aap kahan hai? Tiwari ji is not here. Tiwari ji is not here. Okay. He's here? Tiwari ji is a professor of English. He speaks the most pure, chaste English. But the beautiful part is that he can quote lovely couplets in Urdu and shairi and some beautiful kavita in Hindi, and he knows it from the bottom of his heart. Like, he just says it like that. It's strange that a professor of English who can quote Keats and Shelley can also talk about Ghalib and other great poets. He comes from Muzaffarnagar in Uttar Pradesh, and I want to invite him to speak to you. नमस्कार, सुप्रीति जी का बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी बातें आपसे कर रहे हैं और सबसे अच्छी तरह से बातें सुप्रीति जी कर रही हैं। हम लोगों को हौसला बढ़ाने के लिए आप इस तरह की बातें भी करती हैं ताकि हम कुछ बोल पाए। अभी हमने कहते सुना किसी को, सभ्या कह रहे थे शायद, कि हम अंदर देखने के लिए अपने को यहाँ आए। बड़ा मुश्किल काम है, ये इनर आई ये बनाई हुई है ना, तो अंदर क्या देखेंगे। तो हमने कहीं पढ़ा था कि, और डॉक्टर सेठ को सुनते रहते हैं। डॉक्टर सेठ अक्सर कहते हैं कि जब आप सुन रहे हो, नृत्य की बात अलग है, लेकिन आप इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक या गायन सुन रहे होते हैं, तो सुनने में आँखों की ज़रूरत होती है क्या? आँखें खोलने से क्या होता है?
तो उसकी 2 पंक्तियां हमने कहीं पढ़ी थी, उसमें लिखा था कि वो कहते हैं कि अब और न मन भटके, अब और न मन भटके, आंखें में रख आई प्रियतम की चौखट पे। मतलब अगर आपको अंदर ले जाना है जो संगीत सुन रहे हैं, तो क्या करना है? आंखों को बंद करना है, वरना वो दोस्त कुछ कोहनी मार रहा होगा, उसकी तरफ देखेंगे, या कुछ कोई उठ रहा होगा, बैठ रहा होगा, तो क्या करना है? और क्या करना है? और ठीक से सुनना है तो सीधे बैठना है ना? एनर्जी लेवल ठीक हो जाता है, एकदम बैठ गए, कितने अच्छे बच्चे हैं, एकदम सीधे बैठ गए तो उस बात बनती है। तो आपको यहाँ पे आके सुनना है तो आंखें बंद करनी है, और देखना है तो शायद म्यूज़िक सुनना पड़ेगा, तो कान भी खोल के रखना है। तो इतनी चीज़ें हैं। और अंदर देखने के, जब आंख बंद करते हैं ना, तभी तो अंदर दिखाई देता है। ये तो पता नहीं ये जो देख रहे हैं वो सही है भी नहीं, है ना? तो उसके लिए भी, अब क्योंकि आपने ऐसा कह दिया तो मैं थोड़े बड़े लोगों के लिए भी कह देता हूँ। 1-2 पंक्तियाँ थी कि कहते हैं कि ये सब जुनून की चीज़ें हैं। संगीत जुनून की है, कोई भी काम जुनून के बिना हो नहीं सकता। जुनून के बिना 74 की एज पे पूरे हिंदुस्तान में गर्मी में पहाड़ों में कोई साइकिल नहीं चला सकता। पता है आपको कौन चला रहा है? प्रोफेसर किरण सेठ जो अभी आपको दिखाई दिए थे। जुनून, उनका ही जुनून है कि हम यहाँ पे हैं। बहुत अंधेरा था जब उन्होंने शुरुआत की थी। क्लासिकल म्यूज़िक का स्कूल कॉलेज में सीन एकदम था ही नहीं, लेकिन वो डरे नहीं, है ना? आपको भी यही करना है, जो मुश्किल काम है वो करना है। वो कहते हैं कि वो मेरे जुनून का नतीजा ज़रूर निकलेगा, मेरे जुनून का नतीजा ज़रूर निकलेगा, इसी स्याह समंदर से नूर निकलेगा। तो आप जो हम लोग कर रहे हैं, सब आप भी उसके साथ हैं, और कुछ ना कुछ रोशनी होगी, और वो जो अंदर जाएंगे तब रोशनी होगी। रोशनी अंदर ही है, बाहर नहीं है, बाहर नकली रोशनी है ना? तो वो जो हम जुनून वाले होते हैं वो क्या करते हैं कि उल्टी ही चाल चलते हैं, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवाने गाने इश्क, आँखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। जो आपको असली दर्शन होगा ना, तो कब होगा? इन आँखों से नहीं होगा। जब आप देखते हैं बड़े योगी क्यों करते हैं, आँख बंद करके बैठते हैं, कि वही दीदार है, वही दर्शन है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से सब इसमें एक एक चीज़ में हिस्सा लेंगे, है ना? कोई चीज़ छोड़ना नहीं है, सुबह से शाम तक। और छोड़ेंगे तो बहुत प्यार से चाटा भी लगाएंगे ये सुप्रीति जी, प्यार से। धन्यवाद। Thank you, Devanaji. So if you have any questions, we are happy to respond to them. You can raise your hand and ask a question. Yeah? Venue for different programs. So 4 to 7, you have Hatha Yoga, and Hatha Yoga has been organized in different venues. Those venues will be displayed, and they have been shared with you in the Sandesh as well. Okay, there may be some changes. We will announce that just a little later. You have venues, 24 different venues for your workshops. They are also mentioned in the Sandesh schedule. There is a slight change. We will announce the change just a little later. For afternoon and evening programs, this is your venue. There is no other place you have to go to. You have to be here in the auditorium. Okay.
So anything else you want to ask? We will announce there is some slight changes in the venues for yoga and workshop. We will announce that very soon. Yeah? वर्कशॉप जो आप एक वर्कशॉप ज्वाइन करोगे उसी वर्कशॉप को आपको 5 दिन पूरे दिन करना है. Don't change your guru every day. No, you can't do that. We are going to take attendance in the workshop room and you have to go to the same workshop room. So whatever has been allotted to you, my request is please go there. I want to say one thing because some students came to me asking for a change. They said, I'm learning Kathak, so I want to learn Kathak in the workshop. But I'll tell you something, the workshops are little bit elementary in level, though you're learning from the greatest gurus. But क्योंकि वो सारे students की capacity देख के आपको सिखा रहे हैं. तो कभी कभी क्या होता है कि आप अगर कथक सीखते हो तो it helps you more if you learn हिंदुस्तानी music or even western classical music. तो उससे आपका perspective more holistic हो जाता है, आपकी बढ़त होती है उससे. So my request is don't go for the same thing that you have been learning. It may not be the best thing for you to do. Okay? Yeah. Please tell me. अलग अलग जगह. So in the sheets that are put up, there is a Hath Yog and there is a Yog and an intensive and a heritage walk that is assigned against your name. You are going on that in that group. So heritage walk is kept the same for the entire school, but not necessarily the Yog and the intensive. The Yog and the intensive is assigned to you basis your preference, your first or second preference. So some have said they prefer classical dance. Now we have many different types of classical dances. So we may have given you Mohiniyattam, which you may not have expected. Okay, but please go for it. They are the best gurus. There's no harm. 5 दिन सीखना है आपने उनसे. And last day you are going to present in front of everybody whatever you have learned. So for the last day, on the 3rd of June, afternoon 1 to 3, keep your best dress for that day. So you can dress up when you're presenting in front of everyone. Okay? And yeah, that's what I want to say. Yeah. Overnight concert. Kudyatam is not there in overnight this time. Usually